Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome back to my channel Learn with Bushra with another very informative and very interesting video on the protozoans. First of all, sorry students कि इस बार वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गई थोड़ी सी. आई एम सॉरी बट दिस वीडियो इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही मज़े की वीडियो है. मैं कुछ बिज़ी थी इस वजह से वीडियो इस बार लेट हो गई. सो आप लोगों ने अपना कॉपी और पेन हाथ में ले लिया होगा और स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोन्स को. इन दिस वीडियो वी विल समराइज ऑल एसेंशियल पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रोटोजोन्स, सो कीप वॉचिंग टिल लास्ट. दिस वीडियो इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. प्रोटोजोन्स, व्हाट आर द प्रोटोजोन्स? प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? आपको पता है कि प्रोटोजोन्स आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. प्रोटोजोन्स और द यूनिसेलुलर यूकैरियोट इज़ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन विच ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ अकर विद इन द लिमिट्स ऑफ अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोटोजोन्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. So what are the outlines we are going to summarize or cover in this video? First of all, emergence of the eukaryotes. Secondly, characteristics of the unicellular eukaryotes. What are the eukaryote and symbiote relationships? Classification of the protozoans like animal like, plant like and fungus like protozoans. So हम इस वीडियो में तमाम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल what is the emergence of the eukaryotes? Eukaryotes कैसे evolve हुए? How they evolve? So the first reasonable evidence for life on the earth dates from approximately 3.5 billion years ago when first organism arrived. So 3.5 billion years ago. What is endosymbiont hypothesis? The first cells were the prokaryotic cell like bacteria. The early prokaryotes diversified greatly over an enormous time span. Their prokaryotic descendants now belong to two groups, eubacteria and the archibacteria. हम सब जानते हैं कि हमारा जो प्रोकैरियोट था, प्रोकैरियोट पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था और फिर हमने उसको दो में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स. एक था हमारा यूबैक्टीरिया और दूसरा क्या था? आर्चीबैक्टीरिया. नेक्स्ट, द की स्टेप्स इन द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर्स इन्वॉल्व्स आ symbiogenesis. Now what is the symbiogenesis hypothesis? According to this hypothesis, an anaerobic bacterium that engulfed such an aerobic form gained the capacity to grow in an oxygen rich environment. The engulfed aerobic bacterium persisted inside the cell as a mitochondria with its own genetic material. Over evolutionary time, most but not all genes from the mitochondria come to reside in the cell, and in this way present day eukaryotes have mitochondria and thus known as aerobic organisms or the यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. बहुत ही मज़े की कहानी है कि पहले हमारे पास जब हमारा लाइफ का ओरिजिन हुआ तो पहले हॉट वेंट्स के अंदर हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया आया. एनारोबिक बैक्टीरिया जिसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती थी, फिर समहाउ उसने अपने अंदर जो है एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया. और एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के बाद क्या हुआ कि उसके जो एरोबिक बैक्टीरिया था वो उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ, बल्कि वो एसएच क्या हो गया? सर्वाइव कर गया और एक ऑर्गेनेली में तब्दील हो गया जिसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया. और इस तरह से आज के जो हमारे यूकैरियोट्स हैं या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो हमारे ओरिजिनेट हुए. वेरी इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंग्लिश में बताएं मैम या उर्दू में बताएं, तो मैंने अब पहले इंग्लिश में आपको एलेबोरेट कर दिया, फिर समराइज़ करके मैं आपको इसकी उर्दू भी बताती जाऊंगी. आई होप यू ऑल विल सेटिस्फाइड. Now move towards the next point, that is characteristics of the unicellular eukaryotes. What are the characteristics? First of all, the protozoans are the unicellular. It means they have single cell. Some colonial like volvox and some with the multicellular stages in their life cycle. Coloniality occurs when a cell divides but remain together. The cells may specialize on a particular functions, but all cells are capable of reproduction. The second characteristic is mostly microscopic, although some are larger enough to be seen with the unaided eye, but mostly they are the microscopic organisms. It means they cannot seen with the naked eye. Third characteristic is all symmetry is represented in the group shape. Variable हो सकती है oval, they may be spherical or other shape.
Four characteristic is no germ layer present in them, means they are anemniotes. No organs or tissues but स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज आर फाउंड. इनके अंदर कोई ऑर्गन टिश्यूज नहीं होते, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं. न्यूक्लियस सिंगल और मल्टीपल कैन एग्जिस्ट. फ्री लिविंग, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म आर रिप्रेजेंटेड इन दिस ग्रुप. सो these groups like mutualism, commensalism and parasitism, these 3 or 4 groups represent the symbiotic relationship of the protozoans with other organisms. Locomotion, they locomote by pseudopodia, flagella and cilia, and direct cell movements, some by sessile. Those organisms which are sessile, they can use cilia for their food gathering or for their food purpose. Okay, some provided with a simple endoskeleton or exoskeleton, but mostly are the naked. Nutrition, what are the nutrition? न्यूट्रिशन टाइप्स जो हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दे आर द ऑटोट्रोफ्स, मीन्स दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. Heterotrophs can also exist. Saprozoic means use nutrients dissolved in the surrounding medium, and mixotrophs also exist, means able to manufacture nutrients and eat other organisms. Mixotrophs कहलाते हैं. Aquatic और terrestrial habitat में रहते हैं. Free living और symbiotic mode of life को जो हम enjoy करते हैं. Reproduction asexually by fission, budding and cyst formation, and they can also reproduce sexually by the conjugation process. This is also very important point. What is the conjugation? So conjugation is the process in which the organisms like unicellular organisms, protozoans, exchange their genetic material by the pili known as conjugation, and the fusion of gametes known as the syngamy. So here are the basic characteristics of the unicellular eukaryotes. I hope you will able to understand now these all points and the whole video ago. So next, what is the symbiotic relationship? About 10,000 species of the unicellular eukaryotes are symbiotic or in or on animals or plants, sometimes even other or protozoans. The relationship may be mutualistic relationship, commensalistic and parasitic relationship. 3 तरह के रिलेशनशिप्स अपने अंदर एग्जिस्ट करते हैं. या तो ये म्यूचुअलिज्म हो सकते हैं. म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इज दैट एसोसिएशन विच इज़ फेवरेबल टू both partners can get benefit from each other, known as mutualistic association. What is the commensalism या commensalistic association? In this association, one partner benefits other partner nor benefit not harms. And parasitic association is the one partner benefits at the expense of the other organism, means one organism remain on the or dependent on the other organisms known as the host. So this is the symbiotic relationship. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन दिस वीडियो. ये आप थोड़ा सा ये डायग्राम में भी देखें तो ये आपको मैंने दिखाया हुआ है प्रोटोजोन्स एंड टर्माइट्स रिलेशनशिप. इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म. प्रोटोजोन्स लिव ओनली इनसाइड द टर्माइट्स, एंड टर्माइट्स को इस काबिल बनाते हैं कि दे कैन डाइजेस्ट देयर वुड. सो एंड द प्रोटोजोन्स, ये यहाँ से इनको ये प्रोटोजोन्स इनको क्या कर रहे हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स, प्रोटोजोन्स जो हैं यहाँ से टर्माइट्स से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और बदले में टर्माइट्स को इस काबिल बना रहे हैं कि वो क्या कर सके, वो इसकी मदद से वुड को डाइजेस्ट कर सके. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन. Okay, now what is the classification on the basis of the mode of nutrition? So some are the autotrophic organisms like Euglena. They can synthesize their own food, but in the darkness they are not able to synthesize their own food. The important point है कि यूगलीना रोशनी में तो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है लेकिन डार्कनेस में नहीं कर सकता. Some animals are the heterotrophs, means they are dependent on the other organisms for the purpose of food, and some can get their food by phagocytosis via an enfolding or invagination of the cell membrane, and some can get ingest soluble food like osmotrophs and saprozoic feeders. So ये आपके जो है classification हो गई. Next, protozoans classification. Originally the means of the locomotion was used to distinguish 3 of the 4 classes in the traditional phylum Protozoa. Members of the parasitic class called
Sporozoa lack a distinct locomotory structures but share an organelle capable of invading host. मीन्स क्या, जितने भी इसके ग्रुप्स हैं इनके अंदर सिर्फ स्पोरोजोआ ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कोई लोकोमोटरी आर्गन मौजूद नहीं होता, बाकी सबके अंदर लोकोमोटरी आर्गन्स मौजूद होते हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आ सकते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट आ सकते हैं, और हमारे पास तीसरे कौन से हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आ सकते हैं। So first of all, animal-like protists. Animal-like protists are Phylum Sarcodina, Actinopoda, Apicomplexa, Ciliophora and Sarcomastigophora. Sarcodina में हमारे पास अमेबा वगैरह आ जाते हैं। Actinopoda के अंदर foraminiferans, radiolarians और helizones. Apicomplexa are like the parasitic mode of nutrition जिसके अंदर plasmodium वगैरह आ जाता है। Ciliophora like ciliates and Sarcomastigophora के अंदर फिर zoomastigophora जो animals like होते हैं, और Phytomastigophora that are actually plant like. Plant like protist means euglenophyta like euglenoids, spyrophyta like dinoflagellates, chrysophyta like diatoms, phaeophyta like brown algae, and rhodophyta like red algae. And the third classifying category is the fungus like protists, that are two types, slime molds and water molds. So here we are going to discuss all these important groups as follows. So first of all, animal-like protists that are actually belong to phylum Sarcodina. They use pseudopodia for locomotion. First of all, pseudopodia all are of different kinds. Pseudopodia are actually, what are the pseudopodia? Pseudopodia firstly are the extensions of the cell membrane as well as the underlying cytoskeleton and the cytoplasm. हम कह सकते हैं कि pseudopodia हमारे पास extensions हैं सेल मेम्ब्रेन की जो ऑर्गेनिज्म को मूव करने के काबिल बनाती हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो pseudopodia से ही अपनी मूवमेंट करते हैं, दैट आर फेमस एग्जाम्पल आप सबको भी पता होगा अमीबा है, अमीबॉइड्स। ओके, सीडोपोडिया आर ऑफ वेरियस शेप्स के होते हैं। लोबोपोडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल लोबोपोडिया जो है ब्लंट टिप्ड होते हैं। एग्जांपल्स आर द अमेबा, आर्सीला, डिफ्लूजिया, स्मॉल बेस शेप, ये वाले होते हैं। सेकंड इज द फिलोपोडिया आर थिन एंड शार्पली पॉइंटेड, एंड द एग्जांपल्स आर क्लेमाडोफायरस एंड जुगलाइफा। And third one is rhizopodia. Rhizopodia are branched filaments, means their pseudopodia is branched, and reticulopodia are branched and merged to form a net-like structure. Examples are the globigerina, and the last one is but not least is exopodia. Exopodia is also a thin but contain a central longitudinal filament of the microtubule called an axoneme, and the example is the actinophorus. So these all are the important groups of the pseudopodia, एंड दिस यहाँ पे देखें, ये आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया है कि लोबोपोडिया आपको ऊपर से ब्लंट सा नज़र आ रहा है, एक्सोपोडिया आपको ऊपर से फिलामेंट नज़र आ रहा है, फिलोपोडिया देखें आपको शार्पली पॉइंटेड से ऊपर से नज़र आ रहा है, और टीलोपोडिया आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सो दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने इसकी एग्जांपल्स अपने माइंड में रखनी है, और आपने इनकी जो है शेप्स अपने माइंड में रखनी है, अक्सर पूछ लेते होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का सेकंड ग्रुप है, दैट इज एक्टिनोपोडा। एक्टिनोपोडा इंक्लूड्स फोरामिनिफेरेंस, रेडियोलेरिन्स एंड हेलिजोन्स। मोस्टली दे आर द मरीन प्रोटोजोन्स दैट प्रोड्यूस शेल्स। Foraminiferous shells made up of the calcium carbonate, and that produces chalk. And the best example of the foraminiferan is the white cliff of Dover in England. So here is a beautiful picture of the white cliff Dover of England. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जो है वो चाक फॉर्मेशन की हुई है। Actually this chalk formation is due to the calcium carbonate. एक्टिनोपोड्स के शेल्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं? एक्टिनोपोड्स शेल्स मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास शेल्स, रेडियोलेरिन्स मेड अप ऑफ सिलिशियस सेल्स, हेलिजोन्स आर इक्वेटिक and use reticulopodia for the locomotion, and foratus is the common name of the foraminiferans. These are also very important points to note here, and this is the beautiful example of the radiolarines and the foraminiferans. So here is the second group, Actinopoda. I hope all clear to all of you.
And the third group of the animal like protist is the Apicomplexa, very important group. This group includes all the parasitic protozoans. आपको पता है कि इसके अंदर तमाम parasites आ जाते हैं. These are exclusively marine. ये ज़्यादातर जो है वो marine में पाए जाते हैं. Spores develop and they transmit diseases. They use apical aperture for their locomotion, mostly parasitic like Plasmodium and Coccidia, and they reproduced by the multiple fission. Here is the beautiful life cycle of the Plasmodium. Here you can see that the sporozoites in the salivary glands are present in the mosquito when it bite the human, and then in the human it will inject its sporozoites, and then it will multiply in the human and form the merozoites then inside the body then form the trophozoite, and trophozoite then further gametozoid formation occurs. Gametozoid then from that point mosquito then फिर उसको इंजेक्ट करेगा, फिर अपना बाइट करेगा और यहाँ से the second mosquito will take its gametocytes and the zygote will form inside the gut of the mosquito, and then oocyte formation, and then the whole cycle repeats in this way. So this is important and very interesting life cycle of the Apicomplexa. So these all are very interesting and very important points. आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे. यहाँ पे वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट स्टूडेंट्स दैट शिजोगोनी अकर्स ओनली इन द रेड ब्लड सेल्स एंड द लिवर, बट गैमेटोगोनी अकर्स इन द रेड ब्लड सेल्स ओनली. And as Apicomplexa members like the Plasmodium cause malaria. So malaria is the basic disease caused by the Apicomplexa, and it is characterized by the paroxysm. Paroxysm, it means that fever caused periodically, and this is very interesting points. I hope आपको ये clear हो गए होंगे. Now move towards the next class, that is the Ciliophora. Ciliophora, as the name indicates, they contain cilia for their locomotion. Unicellular contain cilia and pellicle. They contain pellicle. Cilia used for locomotion and water current. They use cilia for their locomotion and for their water current. Means they can get their food for as some organisms are sessile, they are not able to move, so they always get their food by their cilia. वो cilia से अपनी food को लेते हैं. Nutrition by the phagocytosis, it means that they can engulf their food by forming vesicles. Pellicle is hard covering outside their body, like this. Here you can easily observe, this is the pellicle. This is the hard covering outside the body known as the pellicle, and they have a contractile vacuole for the removal of excess water from the body. So contractile vacuole, this is the contractile vacuole. This is responsible for the excess water removal outside the body. They have two nuclei. Very important points, very important point कि इनके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, माइक्रो एंड द मैक्रो न्यूक्लियाई. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइक्रो एंड द मैक्रो न्यूक्लियाई? Micronuclei used for the sexual reproduction and the macronuclei used for the metabolic processes. Sexual reproduction takes place by the conjugation process, and the best example is the paramecium. So here is the diagram, beautiful diagram of the paramecium. So you can observe the cilia. These are the cilia. Cilia are numerous and smaller in numbers as compared to flagella, and this is the oral groove. This is the oral side groove. This is the formation of the food vacuole by engulfing a food particle and forming a food vacuole, and this is the anal pore for the removal of the food, and this is the cytostome analogous to mouth, and this is the macronucleus. The large one is a macronucleus and the small one is the micronucleus. Micronucleus is used for the reproduction and macronucleus is used for the metabolic process. I hope आपको ये points भी सब clear हो गए होंगे. Next, last group is Sarcomastigophora. This is also animal like protist, but it includes two main groups, that are the Zoomastigophora and the Phytomastigophora. आपको word ही बता रहा है. The word indicates zoo means the animal like, and the word indicates phyto means they are the plant like.
Zoomastigophora examples are the trypanosoma that are the animal-like and cause sleeping sickness disease in the man, and the vector is the sissy fly, as you all know, and trypanosoma multiply in the fly gut for 10 days and transfer into the salivary gland. So I put all the essential points related to the protozoans. So you are requested to note all the essential points. And the second one is the Phytomastigophora. Phytomastigophora examples are the Volvox, Euglena, and don't forget Euglena diameter is the 50 micrometer. Euglena contain pyrenoid chloroplast. Now what is a pyrenoid chloroplast and what is the difference between the pyrenoid chloroplast and the simple chloroplast? The difference is that the simple chloroplasts are present only in the plants, but the pyrenoid chloroplasts are present in the protozoans and they disappear in the darkness, so unable to do photosynthesis in the darkness. So this is all about the Phytomastigophora and the Zoomastigophora. So this is the next group plant like protist. I think ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Then wait for the next video part 2, in which we will discuss the plant like protist and the third group, that is the fungus like protist. So I hope you will like this video and don't forget to subscribe this channel and also share your valuable feedback. Thank you so much for your time. Stay connected. Take care. Allah Hafiz.